So hello everyone, my name is Jian. From today, I will start to upload C languages videos on this channel. So today's introduction of C. So why we need सी लैंग्वेज, हमें सी लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमें किसी के साथ भी अगर कम्युनिकेशन करना होगा तो आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके उसको बताना पड़ता है कि ये करो वो करो। ऐसे ही हमारे लैंग्वेज को मीन्स हमारे कंप्यूटर को हमें कोई कमांड देना होगा तो किसी लैंग्वेज के बेसिस पर उसे बताना होगा। इसीलिए मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट हुए। उसमें से सी एक बेसिक लैंग्वेज है जिससे हम प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग करेंगे। आई यूज देव सी compiler to run the program. There are lots of editors, but Dev C++ is जस्ट लाइक डाउनलोड करो और यूज़ करो। और हमें अगर वीडियोस को डाउनलोड करना होगा तो उसको सेटअप करने में बहुत झंझट है, इसीलिए मुझे देव सी प्लस प्लस ही अच्छा लगता है। इसमें देव सी प्लस प्लस है पर इसमें हम सी लैंग्वेज भी कंपाइल कर सकते हैं और सी प्लस प्लस भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ फाइल देन क्लिक ऑन फाइल एंड देन न्यू एंड देन सोर्स फाइल। If you want to create a file, a single file, then click on source file. And if you want to create a project, then click on projects. So first of all, we will write our first program, hello world. All learning of all language it's started from this program. So I will starting from same. For this, we need to first include libraries hash include studio.h। अभी ये मत पूछो कि ये किस लिए है, अभी सिर्फ देखो समझो कि प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ हमें इम्प्रूव करना मैंडेटरी है इन सी। सो फर्स्ट हैश इंक्लूड studio.h। देन नीचे यहाँ से हमारी नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की जो प्रोग्रामिंग का जो फंक्शन होता है उसका स्टार्ट होता है। फंक्शन इज लाइक हमें उसमें जो भी इनपुट देते हैं वो आउटपुट निकाल के देता है। जस्ट लाइक मैथ मीन्स अगर आपका फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, सो इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू इनपुट देते हैं तो कुछ तो आउटपुट आता है। जस्ट लाइक दैट जो हम इसमें इनपुट देते हैं वैसे ही वो आउटपुट देगा। सो इसके स्टार्टिंग में हमें लिखना होता है इंट मेन ब्रैकेट देन करली ब्रैकेट। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग की स्टार्टिंग हमें हेलो वर्ल्ड इस प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। फॉर दैट मीन्स हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन होता है जैसे कि प्रिंट एफ इन ब्रैकेट। अब इस दो सेमीकोलन में आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट होगा। जैसे लाइक हेलो वर्ड and then after every line you should give a semicolon, not for every line but there are some rules in future you will learn automatically to give that. Here I will give semicolon and next return 0. First of all save the file. For that click on file then save. Then here we can select name. Here I will give a name hello world. Here you can select language. Here are two languages C and C++. We are doing the code in C, so we will select C language and then hit save. Here we have saved our file and for run here are many options like rebuild, compile, run, compile. Okay, this is compile and run, this is run, this is compile.
if you want to run this program, first of all, we need to compile that program. For that, we need to press this button. Now our program has compiled. Here it. Look, यहाँ पर हमें hello world print हो गया है. To avoid two time clicks means एक बार कंपाइलर पर क्लिक करो फार और फिर बाद में रन पे क्लिक करो, उसकी जगह पर एक ही बटन दिया है, उसमें दोनों है, कंपाइल एंड रन. सो वी कैन just press compile and run, and our file is our output is ready. Hello world. So यहाँ ये क्या है, means printf is a function that is located in this file stereo.h. stereo.h means इसमें वेरियस टाइप के फंक्शन होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, मीन्स स्कैन फंक्शन, प्रिंट फंक्शन. बट असल वेरियस फंक्शन के लिए वेरियस फाइल होते हैं, जैसे कि और एक है हैश इंक्लूड malloc.h. Okay, here we have add another header file that have different functions that we can use in future. So that's for all this video. Thank you for watching.